students, today we are going to study our new chapter, Sources of Energy. In this chapter, we'll study about what is energy, what are different forms of energies, what are its sources, and the classification of sources of energy. First, we define what is energy. Energy means the capacity to do work. In junior classes, we have already learnt about different forms of energy, that is light energy from the sun, mechanical energy, electrical energy, sound energy, nuclear energy, chemical energy, and so on. And we all know that these energies are interconvertible. वे एक दूसरे में change हो सकती हैं. We need energies for performing all our day-to-day activities. सारा दिन हम बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ पर हमें one or the other form of energy is required. Like in the morning we start washing machine at home. हम घर में छोटे छोटे काम करते हैं. We use mixer grinding. We switch on the fan. We switch on the light. So one or other form of energies are being used here. The forms of energy that we use every day are stored in different ways in different sources of energy. And some of the forms of energy we use for generating heat. So the substances that produce heat on burning is called as fuel. तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें बर्न करके हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसी को हम कहते हैं फ्यूल. तो हम बहुत सी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं. और हीट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट इट फ्रॉम द fuel. In this chapter we won't study much about this fuel, but the next we'll study about how we get the fuel and utilize them, what are their effects, etc. Right. So now come to the classification of sources of energy. We can classify the sources of energy on different bases. The very first is the basis of their occurrence. How do they occur in nature? Then we divide them into two major groups. One is known as natural source, which are available naturally in the nature. They are sun energy, wind energy, ocean energy, geothermal energy, etc. Very common, you can see the sun energy or the wind energy. Then we have many man-made sources of energy in the form of heat के लिए we use many artificial sources. Then light, we use torch, bulb, tube light, etc. or candle. These are known as synthetic or man-made sources of energy. So on the basis of occurrence we have got two type of resources. Number one, natural source of energy, and synthetic or man-made source of energy. Next, we divide the source of energy on the basis of their physical state. Physical state, we define them as maybe solid fuels, solid जैसे wood, coal, charcoal, etc. Then liquid fuels, we can see kerosene, petrol, diesel, etc. Then gaseous fuel, that is CNG, LPG and biogas. So these are some of the sources of energy on the basis of physical state. So we have got three forms of energy sources on the basis of physical state: solid, liquid and gas. Solid में ये देखिए हमारे पास आते हैं wood, coal, right? Liquid में we use this kerosene oil in the lanterns, petrol, diesel in vehicles, then LPG at our homes we come, ये देखो इसको कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और CNG is also used as running vehicles, etc. On the basis of availability, resources are divided into two groups. One is renewable. Renewable means अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो हम उन्हें शॉर्ट टाइम में दोबारा ले सकते हैं. They get replaced in a short time.
राइट, एंड दे आर इनएग्जॉस्टिबल, कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जैसे हमारे पास है सोलर एनर्जी, राइट, प्लांट्स की एनर्जी देख लीजिए जिसको हम बायोमास एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से बनने वाली एनर्जी, क्योंकि जब तक वाटर साइकिल नेचर में रहेगा वी ऑलवेज गेट दिस एनर्जी, सन की एनर्जी। सो दीज आर सम ऑफ द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Then we come to the non-renewable. Why we are calling them non-renewable? Because they cannot be replaced in a short time. If once finished, एक बार ये ख़त्म हो गए तो short time में हमें available नहीं होंगे, right? That is why they are known as exhaustible sources of energy. एग्जॉस्टिबल मीन्स जो हमारे बड़े आराम से ख़त्म हो जाएंगे एक बार और हमें ईजिली अवेलेबल नहीं होंगे. इसमें हमारे पास जनरली फॉसिल फ्यूल्स आते हैं जिनको हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दे आर कोल, पेट्रोलियम, natural gas, etc. They are non-renewable. They are present in very limited supply on the earth. And if once finished, in a short time we cannot see them again. हमें दोबारा वो अवेलेबल होंगे ही नहीं. इसीलिए इनको हम लोग एग्जॉस्टिबल भी कहते हैं, एग्जॉस्ट होने वाले, विच कैन नॉट बी रीप्लेनिश्ड इजीली. दे आर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, एट्सेट्रा. तो हमारे पास 3 कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गए. फर्स्ट हमने बात की है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, दैट इज नेचुरल और मैन मेड. सेकेंड वी टॉक अबाउट on the basis of their physical state, solid, liquid or gas. Third one is the basis of their availability, that is renewable or non-renewable, or we can call them as inexhaustible or exhaustible sources of energy. So these are some of the different sources of energy. The most important sources of energy we use today are fossil fuels. What are fossil fuels? Fossils are the dead remains of the past form of life. जो organism में भी plants और animals कभी अर्थ पर थे, उनके जो dead bodies से हमें fuels available होते हैं उनको हम कहते हैं fossil fuels. ये जो plants और animals बहुत लॉन्ग टाइम तक अर्थ के नीचे दब जाते हैं, दे गेट बरीड अंडर द अर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग 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 टाइम अंडर द प्रेशर, ठीक है, एंड हीट. तो उनमें प्रेशर और हीट के एक्शन से ये फ्यूल्स जो है हमें अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. जो भी प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ के नीचे दब गए तो लॉन्ग पीरियड के बाद वो एक फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसका नाम है फॉसिल फ्यूल्स. एंड दे आर जनरली 3: कोल, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, एंड नेचुरल गैस. एंड फॉर दीज फॉसिल फ्यूल we'll study detail in our next video, that is part 2. Thank you. Please like and subscribe.